वाय डू पीपल लिव्ह अस इन लाईफ अँड वाय डू पीपल बी विथ अस इन लाईफ? लोक आपल्याबरोबर आयुष्यात सोडून का जातात किंवा आपल्याबरोबर का असतात? इट्स अ बिग क्वेश्चन आय एम फेसिंग इन लॉट ऑफ ऑर्गनायझेशन राईट नाव. द क्वेश्चन दे आस्क मी इज, सर आमच्याकडे लोक टिकत का नाहीत? ओके, देन जसे की लोक जे आहेत ती जात का नाहीत? ज्यांना काढायचं ती पण जात नाही आहेत. आज की तारीख में, इन टूडेज डेट, एम्प्लॉयमेंट में बहुत लोग खाली पड़े हुए. ओके, इफ यू कैन फाइंड द राइट पर्सन राइट नाउ, देयर आर nth ऑप्शन अवेलेबल, nth ऑप्शन अवेलेबल. बट ऑल दोज हु वांटिंग पीपल, monster.com, ये notary.com, ये कॉम वो कॉम, सब जाते हैं, उनको लोग मिल नहीं रहे. एंड वी टेकिंग पीपल जस्ट टू फिल इन द प्लेस. फिल द ब्लैंक्स आता है ना, हाँ, एंड वी हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. वी आर जस्ट फिलिंग पीपल इन द प्लेस जस्ट बिकॉज वी नीड दैट पर्सन राइट नाउ. बट व्हाट इज दैट मेक्स पीपल लीव यू इन लाइफ एंड व्हाट इज दैट मेक्स पीपल बी विथ यू इन लाइफ? Because there are so many people in this world who hold on to small things so tight, and we relate it to it so differently. Either it stops you or it motivates you. Either it stops you or it motivates you. Whether it's a relationship, whether it's a past experience. How many of you all have chartered accountants who are really chartered accountants? Are they accountants or are they chartered accountants? They are actually accountants. पूरा अकाउंट संभालते हैं, वो तो हम भी संभालते हैं. टैली में अपने पास होता है, उसे कॉम्पिट करते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट ये वो वॉट एवर इज लेफ्ट, सर्विस टॅक्स ये करके देते हैं. होते आता किती किती भरायचं इन्कम टॅक्स यावर्षी, एवढा का? ओके, दे मेक अ बॅलन्स शीट गिव्ह यू. बट वाय आर वी हॅव्हिंग द सेम चार्टर्ड अकाउंटंट फॉर सो मेनी इयर्स? घरवाला है क्या? शादी की है क्या? वाई द सेम सप्लायर्स? yesterday I was talking to somebody and that person was telling कि अगर इसके पास से मैं माल इतने साल से ले रहा हूं, सपोज इट्स प्लाउड, इससे 15 रुपए से मिल रहा है, आई नो आई एम गेटिंग 12 रुपीज फ्रॉम हियर, बट माय फादर इज इससे ले रहे हैं. क्यों? नहीं, इतने साल से इससे ले रहे हैं. 3 रुपीज का डिफरेंस है बस. वाई? थिंक अबाउट इट. सी, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट मे बी राइट फॉर यू, बट आई एम स्टिल पॉन्डरिंग ऑन दैट थॉट. विचार करून बघा ना. आता तुम्ही कन्स्ट्रक्शन चालू करताल, आफ्टर सम टाइम पंकज, यू एंड मे बी ही, ऑटोमेटिकली वही सप्लाई को हो जाएगा. अरे सीमेंट भेजे, इतना ट्रस्ट या इतनी श्रद्धा कि रेट भी नहीं पूछना, रेट पूछना ही बंद हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. यू नो वो बराबर रेट लगाता है. सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस काम बताना बंद कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं है. दिन हाँ ये आ गया ना, हो जाएगा काम, वो उसको पता है क्या काम करना है. How many times you have tried something new in life with people in your organization or people with you? Because they say the younger the person, the more the creative and the more dynamic he is. You must have heard inside the class. Suppose I join an organization at the age of 25, 26 or after my do my MBA or something, मैं एक सेल्समैन हूँ. हाँ, मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल से ऑलरेडी एक आदमी सेल्स का काम कर रहा है. So I come with a lot of what? Hunger. कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, सीखना है, ये करना है, वो करना है. And when suppose a particular client का नाम निकलता है कि इतने सालों पहले ये क्लाइंट से हम लोग फॉलो किए, अभी फॉलो करना बंद किए, कभी अपना अकाउंट बना ही नहीं है. And suppose somebody has to go there, the old fellow who has become matured with the experiences, इसे नहीं यार, इसका जाके टाइम खोटी हो जाएगा. But you don't know, the new person may go and actually get through the call and get an order and come back. Think about your own business when you started the business. जब खुद का business start किया, you are ready to go and meet anybody. भले माल ले ना ले. Now when you have a few clients ready, इतने से clients अपने पास है, satisfying clients, पेट भर रहा है, सब कुछ हो रहा है. Now what happens? नहीं यार, उसके पास गया बहुत टाइम खोटी होता है, ये तो पेमेंट भी नहीं आता है. You already have made a strong perception about the person and you are not ready to go ahead. You have a driver on your car, okay, and you know वो टेम्पो का ड्राइवर है, अपने कार का ड्राइवर है, अपने ट्रक का ड्राइवर है. You know उसका परफॉर्मेंस इज नॉट द परफॉर्मेंस यू थिंक और you know इसका परफॉर्मेंस नहीं है. Even then, why do you carry him in life?
in your business, in your organization, with your customers. Why are you not able to tell your customer कि भैया आज से आपके अकाउंट को मैं माल नहीं दे पाएगा, आपका बहुत पैसा आना बाकी है, आई थिंक ये अकाउंट पहला क्लियर करते हैं फिर आगे की बात करते हैं. Why you scared कि मेरा पैसा निकल जाएगा, वो अकाउंट दूसरे के पास जाएगा? Why are startups growing so faster? फैक्ट्री बनाने के पहले you will have to get young blood into the organization who can visualize the future in their ways, not your ways. Or at least you have to go to that level. That's why it's so easy for me to sit with a small child and talk to him also, because I can go to that age and be with him. I can go and sit with a 85 years old a young person and I can relate to that thoughts also there. And that's my work. Okay. But how many of you all can actually visualize? Why our organizations are not growing at jet speed, and only why when you read economics times and people who are doing something, youngsters are millionaires right now. We are not able to understand what is the next. We are so attached to people and so attached to the past experiences of our life कि ऐसा नहीं हो सकता है. We have learned inside the class 1,000 times. There is a solution and solution is on the way. If that thought is there ना, कोई भी काम करो, अभी रुकना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आएगा आएगा. अभी आएगा, अगले साल आएगा, 10 साल आएगा, और मे बी नेक्स्ट जन्म आएगा, पता नहीं है. You can replace a kidney, a heart, everything now. There was a time when हार्ट सर्जरी होता था तो सब लोग उसको मिल लेते थे कि पता नहीं वापस बाहर आएगा कि नहीं आएगा. Now you can put a pacemaker inside, you can do this, you can do that, कुछ भी कर सकते हैं. Why? Because there are people who can visualize this can happen. There are people. How much are you working on something crazy in your own organization? Because you are attached to the same old things of life. There are two reasons we keep people in the organization. एक कारण है कि they are very loyal. है ना, कि कितना भी पैसा इसके पास दो, पैसा वैसे का वैसा रहेगा. सेकेंड थिंग, मे बी ही इज रिस्पॉन्सिबल. किसी ऊपर कोई भी जिम्मेदारी डालो, मैं नहीं हूं, मैं किधर भी घूमने जाता हूं, मेरे को कुछ करने, मेरे को ऑफिस में बैठने की आदत नहीं है, दे विल टेक केयर ऑफ इट, और ही विल टेक केयर ऑफ इट, शी विल टेक केयर ऑफ इट. टू मेजर रीजंस. द रियल रीजन शुड बी ही इज द राइट पर्सन इन द राइट चेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट. है कि नहीं? कितनी बार अकाउंटसाठी घेतलेली मुलगी सेल्स मध्ये जाते, सेल्स मध्ये घेतलेली मुलगी बॅक ऑफिस जाते. बहुत बार होता है. यस, वी नीड टू हैव गुड पीपल विद अस, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो दे कैन बी विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एंड योर लव्ड वंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे कम फॉर अ नीड, दे कम फॉर अ नीड. ऑफिस में 1 रुपये का चोरी हो गया नहीं होगा, ऑफिस का काम बराबर चलेगा, बराबर चलेगा, बट थिंग्स विल नॉट चेंज और विल नॉट ग्रो. सो व्हाई आर वी नॉट एब्जॉर्बिंग न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाई आर वी स्टिल वेटिंग कि कोई तकलीफ दे फिर उसको निकाल दो? व्हाई आर वी सर्विंग द सेम ओल्ड कस्टमर्स? एक Amazon आ सकता है, एक फ्लिपकार्ट आ सकता है, एक और दबांग फबांग जो भी आ सकता है, एंड दे हैव एन नंबर ऑफ कस्टमर्स रेडी. दे डोंट चूज देयर कस्टमर्स, customers choose them. Tomorrow is for those people who are changeable. Who are not changing will not grow. Will not grow. See, there are a few businesses which you should give up now. Some businesses you should give up. Because वो business के लिए already कुछ ना कुछ नया आ गया है. For example, if somebody is into say, सर मेरा कैसेट का दुकान है, ऑडियो वीडियो कैसेट, चलेगा क्या? Because it's gone. DVDs and all these things and everything online आ गया. So if your business has come to worth right now कि it needs to take a leap or it needs to change, you see, go the other way. That means there are limitations to what I am doing right now. I need to do something new. I need to do something new. अगर कुछ नया करूंगा और नया क्या करूं यार, बिजनेस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गेट द फ्रेश ब्लड, आउटसोर्स योर वर्क. द सेम बिजनेस यू डू राइट नाउ, गो होम टुडे, सिट इन योर ऑफिस, खुद की दुकान में जाके बैठना ऑफिस और आस्क योरसेल्फ कि इज दिस व्हाट आई एम मेंट टू डू एंड द वे आई एम डूइंग इट राइट नाउ, और आर देयर बेटर वेज. जस्ट आस्क योरसेल्फ, इफ टुमारो अ स्टार्टअप स्टार्ट्स इन द सेम बिजनेस विद मी, व्हाट विल यू डू? वो क्या करेगा? बिकॉज अ फ्यू बिजनेसेस आर एक्चुअली गेटिंग क्रंच नाउ. वो उतना बिजनेस नहीं कर पा रहे. Why Nokia is no more with us?
Is Nokia there? No more. It's become Microsoft. है कि नहीं? अभी मारुति वापस एकदम वो यंग ब्लड के जैसा वापस आ रहा है. But where is Maruti gone? Where is Fiat? Where is Ambassador? They didn't change with time. And at this age, whatever you are doing, if you really want to, in the next financial 16-17, do something bigger. I want a car in April, I want to do this, I want to do this. Can I think of doing something bigger with the eyes of somebody else or looking into something else? For example, if you take your daughter to the site, if you take your daughter to your office and you make them, आज से एक दिन तू मालिक, क्या करेगा नया चेंज? And they'll give you such ideas कि दिमाग चलेगा नहीं, दिमाग नहीं चलेगा. Because they are only seeing possibilities. They don't know what is the work, hard work behind it. But they may give you very bright ideas. First important thing, if you want to get ready for the next financial year, find out all the places you will save time. Now, where can you save the time? Either where you are doing honorary work, जिसमें कुछ फायदा नहीं है, but you are helping people, or you are doing some work, or some work which you have been doing from ages. From ages. Because there are people who are much better in the same work than you. But they are looking for opportunities. They are ready to work at a very nominal salary also. Get the best brains in your organization. Hire the best brain in your industry or a best consultant in your industry for competence wise. Baki to you can always fall back to me. But competence wise. For example, मुझे अगरबत्ती का फैक्ट्री बनाना है, I will find out the best consultant in manufacturing of अगरबत्ती in this world. अगर बोलता है 30 लाख होगा, 20 लाख होगा, फैक्ट्री पूरा मैं रेडी करके दूंगा, I will invest on it. Why? Because it will become something, a very beautiful thing, which will be very futuristic. If I bought a laptop in 2000 जब आया और वो लैपटॉप में यूज ही नहीं किया, अभी निकाल को चलेगा क्या? ये बोलेगा दे कचरा टाकू दे. Because everything is upgrading. Everything is, if machines can upgrade, why are we not upgrading ourselves? Yes, there are upgrades, there are new technologies, but are we using the technology in the right way to grow our business? What is that gap in the market right now, Joran? If you don't know how to find it out, get a few young blood or a master in that field and find out how to do it.